Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter about science, the wonderful world of science, यानी साइंस की विज्ञान की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया. In this chapter, first one is introduction about science. As human beings, we have always been curious to know something new about surrounding. हमें कुछ नई चीज़ों को जानने और उनके बारे में जानने की इच्छा होती है कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता है, एक बेबी कैसे बॉर्न करता है, ये सब चीज़ें किससे रिलेट होती हैं हमारी साइंस से कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों हो सकता है। कुछ भी चीज़ें हो, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा साइंस कहलाती है. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. बचपन से ही हम उनके बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं. द वर्ल्ड वेयर वी लिव इज वेरी ब्यूटीफुल. मैनी सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आर स्टिल अनकवर्ड. अभी भी यूनिवर्स के ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका राज अभी भी नहीं खुला. एज ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज हैव बीन क्यूरियस टू नो अबाउट द वर्ल्ड ऑफ साइंस. हम ह्यूमन बींग्स साइंस के बारे में या विज्ञान के बारे में जानने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं. क्वेश्चंस दैट मेक ऑलवेज स्ट्राइक इन आवर माइंड. व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज यूज ऑफ इट. कि विज्ञान क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है. व्हाट इज साइंस. साइंस इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड. लैंग्वेज है गॉड की. इट इज वे थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्टिंग अपॉन अंडरस्टैंड एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स. द होल यूनिवर्स symmetrical. Everything in this world either has negative or positive. This what make want to how science work in our life. Science everywhere, science हर जगह है. When we study mountains, plain grass, trains or forest, we are always excited to know new things. नई चीजें जानने के बारे में हमें उत्सुकता रहती है. When you will see flower, a question arise your mind. How does a flower bloom? कि एक फूल कैसे खिलता है, किस तरह से खिलता है. फूल को देख के एक सवाल मन में आता है ना कि ये सुंदर सा फूल इस पौधे में किस तरह से खिला. वाई डू द स्टार शाइन. तारे कैसे चमकते हैं. दीज आर सम मिस्ट्रीज ऑफ साइंस दैट हैज अनकवर्ड. व्हेन वी लुक वी फाइंड साइंस. द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ साइंस. जब हमारे मन में इन चीजों के बारे में सवाल उठते हैं, हम आसपास देखते हैं, तो हमें साइंस को या विज्ञान को और जानने की इच्छा होती है. साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट एंडिंग जिक्सॉ पजल. यानी ये एक अनसुलझी पहेली की तरह है, या बोल सकते हैं कुछ पहेलियां सुलझ भी गई हैं और कुछ आज भी अनसुलझी है. दिस इज लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर. नाउ डिस्कवरीज ऑफ्टन चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड. अब कुछ डिस्कवरी, कुछ आविष्कारों ने हमें विज्ञान को जानने में मदद की है. एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ. अर्थ द ओनली प्लैनेट वी नो सपोर्ट लाइफ. इकलौता प्लैनेट जहां पे जिसके एनवायरमेंट में हम रह सकते हैं. प्लांट्स. हाउ डज अ सीड ग्रो इन अ प्लांट. अ सीड्स नीड वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स. अब एक प्लांट किस तरह से ग्रो करता है. पानी, सूरज की रोशनी और न्यूट्रिएंट्स की मदद से. एनिमल्स. हाउ डज कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई. अब एक कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में किस तरह टर्न हो रही है. दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. इस बदलाव को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. फिर आता है हमारा इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म. इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलकर साथ में रहती हैं. कौन कौन. प्लांट्स, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म. इन अ गिवन एरिया इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स टू ग्रो. खाना हमें एनर्जी भी देता है और हमें ग्रो करता है, बड़ा होने में मदद करता है. In India, we have many different kinds of food from different regions. What are they made? How do we find out? Like food, water is essential. जिस तरह खाना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, पानी भी उतना ही जरूरी है. We need to survive. Water can be in the form of solid, ice, water or gas steam. Anyone love cold water in summer? कईयों को गर्मियों में ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में गर्म. हाउ डू यू अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड. अब गर्म ठंडे की आपको कैसे पहचान हुई या कैसे पता चला कि ये गर्म ही है या ये ठंडा ही है. नाउ मटेरियल. देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं. पेपर, मेटल, कीज, प्लास्टिक, रूलर, रबर, इरेजर, मैग्नेट, क्लोथ्स, कप्स एंड मोर. बहुत सी चीजें. डिफरेंट आइटम आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. सारी चीजें अलग अलग मटेरियल की होती हैं. रबड़ की चीजें रबड़ मटेरियल की होगी.
मेटल की चीजें मेटल की होंगी, प्लास्टिक की चीजें प्लास्टिक की होंगी। यानी देखा जाए जितनी भी चीजें हैं वो सब अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। We will have an almost unending the list of question about everything in the world. मतलब एक ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होगी। वो किस चीज की है? साइंस को जानने की इच्छा और चीजों के बारे में जानना। साइंटिफिक मैथड। Scientific method is a step-by-step process that we use to find answer to question and solve the problem. Scientific method का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक कदम करके धीरे धीरे आगे बढ़ना और जिन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं उन चीजों को पढ़ना और समझना। It help understand the world by some step like observation. ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, और फिर आप निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ या ऐसा क्यों हुआ। सपोज यू सी अ बर्ड इन योर गार्डन, इट ब्लूम्स द नेक्स्ट डे, यू फील हैप्पी, सडनली अ क्वेश्चन क्लिक इन योर माइंड, हाउ डज अ बर्ड ब्लूम। आपने एक कली को अपने गार्डन में देखा, नेक्स्ट डे आपने देखा कि वो फूल बन गई है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह से फूल बन गई है, ये कैसे खिली। इन सब वे व्हेन यू वर्क विद योर पेन एंड सडनली इट स्टॉप, वुड व्हाट वुड यू डू? यू माइट गेस दैट द इंक इज फिनिश। आप अपने पेन से काम कर रहे हैं, चलता चलता पेन रुक गया, तो आप यही तो बोलेंगे कि पेन की इंक खत्म हो गई इसलिए वो बंद हो गया। इट इज एम्प्टी एंड ड्राइड अप, या तो पेन की इंक खत्म हो गई है या सूख गई है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, उसी तरह से साइंस वर्क करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर पेन स्टॉप राइटिंग और हाउ बर्ड बिकम फ्लावर एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड, यानी स्टेप बाय स्टेप हर चीज हो रही है। यू मस्ट फील दैट यू हैपेंस encountered a number of daily life situations where we inadvertently and inadvertently apply the scientific method of some degree gaining. Learning by doing, करिए और सीखिए। Observe and analysis, ये आप खुद करके देखेंगे। Write about similar problems that you try to solve. Write step and find the conclusion. First notice something interest or unclear. Think of question about what you observe. Make an educated guess hypothesis about the answer you question. Test your hypothesis, यानी किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको समझिए, जानिए, कंक्लूजन पर पहुंचिए, एक्सपेरिमेंट करिए, ऑब्जर्वेशन करिए। Look at the result of your experiment. They support your hypothesis. Decide whether hypothesis was correct based on the result of experiment. अब आपको देखना है कि आपका एक्सपेरिमेंट जो आपका आविष्कार है वो सही है या नहीं। Observe and analysis. Describe a daily life situation where you feel someone was following in scientific method. Of course, remember you that you will not find answer of all questions. अब जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको हर चीज का उत्तर आसानी से नहीं मिल सकता। We are all scientists. We think something new. देखा जाए तो हम सारे ही साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हैं। हम कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। हाउ डज दाल कुक इन कुकर? दाल कुकर में किस तरह बनती है? हाउ डज इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट? इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह से लाइट होता है, फ्यूज होता है? व्हेन वी ट्राई सम आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर इन वे शो इज क्यूरियोसिटी, यानी किसी चीज को जानने की इच्छा हमारे मन में आती है। नॉलेज विल इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू मेजर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। जब हम करेंगे तभी तो हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है। Speaking of ability to learn science better, the most important aspect is to be curious and notice your surrounding with a great observation. This is what makes us curious and we begin asking questions how and why. ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। Since this world is full of mysterious things, हमारा ये जो संसार है वो mysterious things से भरा हुआ है। We always have chance to explore a lot. और हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Observe and analysis. If you are keen, ask why. About something, what would you ask about? Make an attempt to write down how you would try and find a solution. आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न आता है तो उसको लिखिए और उसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। Science is something that people deal with numbers. This is not done alone. Seeking help for someone
while dealing with scientific experiment is quite understandable and obvious. Thus, it what makes it interesting and more enjoyable. जब आप किसी चीज को दिल से जानना चाहेंगे या समझना चाहेंगे, आप अकेले उस चीज को नहीं समझ सकते, आप किसी बड़े को साथ लीजिए, किसी एक्सपीरियंस को साथ लीजिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए और उन चीजों को जानिए और पहचानिए. Unending exploration with deep observation. Student must not have disappointed if not finding answer. अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. बिकॉज दिस इज द वन सेट ऑफ जर्नी. ये आपकी जर्नी का सिर्फ एक हिस्सा है. आगे जब चलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे. वेयर दे विल डेवलप deep into the world of amazing science. Much like little kids having fun in rain, science is all about the wonderful expedition. One should keep enjoying, keep searching, and never stop wondering about the secrets of universe. अब हम बोल दें, आप ये चीज सोचिए कि पेड़ों का हरा रंग क्यों है. एक्सपेरिमेंट करिए, समझिए कि उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी मदद से पेड़ों का जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है. अब उन आप दूसरा क्वेश्चन ये मन में आया कि हरे रंग की पत्तियां हैं तो हरे रंग की ही क्यों है. हरा रंग ऐसा क्या काम करता है. हरा रंग सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद से बनाएंगे. ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधों को आप जाके खाना खिलाते हैं, नहीं. जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. तो ग्रीन कलर भी होना किसी ना किसी वजह से है प्लांट्स में. नाउ रिकैपिटुलेट. जितनी चीजें पढ़ी उनको रिवाइज करते हैं. Science is a way of thinking, observing, and acting upon, understand and uncover the secrets of universe. An ecosystem includes all the living things like food, water, and essential for life. Scientific matter is step-by-step process. Speaking of ability to learn science better, the most important aspect is to be curious. जब तक आपको जानने की इच्छा नहीं होगी, आप साइंस को नहीं समझ सकते. Seeking help from someone while dealing with scientific experiment is quite understandable. Now, encyclopedia, do it yourself, learn yourself. Now, checkpoint. MCQs. Darken the correct option in the OMR sheet. What drives human to explore and ask questions for young age? Curiosity. What does the scientific method help us to do? Find reliable answer and understand the world better. Many secrets of universe is uncovered. What does food gives us? Energy. What does a seed need water and sunlight to grow? Now question B, filling in the blanks. The dash where we live is very beautiful. Word. The whole universe is symmetrical. Science is a way of thinking, observing, and acting upon, understand, understand the secret of the universe. Water can be solid, liquid, or gas. Scientific method is a step by step process. Now question C, write T for true and F for false. Science is a language of science. False. A seed needs water, sunlight, and nutrients to grow. True. A caterpillar turns into butterfly. True.
Curiosity is not important in science. False. A flower turns into bud. False. बर्ड एक फ्लावर में कन्वर्ट होती है, फ्लावर बर्ड में कन्वर्ट नहीं होता. Now question D, match the following. Curiosity, desire to learn and understand. Metamorphosis, caterpillar to butterfly. Scientific method, step by step. Water, essential for life. Science, a language of God. Now rest of the exercise, question E, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.